channel SLP Sanjay Kumar, voice therapist. And today we are live, and today we are before treatment live. Today date is 3rd June 2025. And in fact, in the future we'll be doing post-treatment live, and don't forget to watch the post-treatment live as well. And in this live, the people whose videos you are going to watch before treatment. So these are the guys. Yeah, there is no need to speak. Anyway, just you can just shake your hand. Okay. तो इन लोगों की आवाज़ को आप सुनेंगे ट्रीटमेंट से पहले एक एक करके ठीक है, एक एक करके जब मैं एक एक करके बुलाऊंगा तो, और भविष्य में जब हम ट्रीटमेंट के बाद लाइव होंगे तो फिर इनकी आवाज़ को आप लोग सुनेंगे। तो इसके लिए जो लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब हम ट्रीटमेंट के बाद लाइव हों तो आप ज़रूर देख सकें। तो द टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लाइव विल बी फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन अबाउट मी, एंड देन आवर यूट्यूब चैनल, एंड देन विल बी लिसनिंग द पेशेंट्स वॉइस, and there will be some question answer session as well. If you have any question you can just keep writing and we'll be replying. तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SLP संजय कुमार वॉइस थेरेपिस्ट पर। और आज हम लोग ट्रीटमेंट से पहले लाइव हो रहे हैं और आज डेट है 3rd जून 2025। और मेरा एक संक्षिप्त परिचय ये है कि मेरा नाम संजय कुमार है, और आप SLP संजय कुमार भी कर सकते हैं। SLP मतलब हुआ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, और मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, ऑडियोलॉजिस्ट भी हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई की है एम्स दिल्ली से, एम्स न्यू दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन किया है स्पीच एंड हियरिंग साइंस में। और मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फील्ड में किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से। और मेरा पैशन है वॉइस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ वॉइस डिसऑर्डर्स। तो ये रहा मेरा संक्षिप्त परिचय। और हमारे सेंटर पर हियरिंग एवोल्यूशन, हियरिंग एड डिस्पेंसिंग भी किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस लाइव में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो लाइव में आगे जाने से पहले थोड़ा बहुत मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बता देता हूं कि जो लोग नए हैं उनके लिए है। जैसे मैं अगर यूट्यूब चैनल को हम टर्न कर रहे हैं इधर, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आप ये देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज है। और जो हमारी सब्सक्राइबर्स फैमिली है 30,000 से ज़्यादा हो गई है, और मोर देन 2,000 वीडियोज़ हैं। और ये होम पेज पे 35 मिनट्स का वीडियो है जिसके बारे में बोलते रहता हूँ कि आप लोग इसको देखिए अगर हमारे काम को समझना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो जैसे कि अगर आप देख रहे हैं इस बच्चे का, तो ये बच्चा USA का है, और इसके फादर हैं रूमेटोलॉजिस्ट हैं, इसकी मदर एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट हैं। कहने का मतलब USA में होने के बावजूद भी उन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा और हम पे भरोसा किया। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये पेशेंट रसिया से है, फिर ऐसे करके आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ये लंदन से आए थे पेशेंट, फिर ये मलेशिया से है, फिर और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको ये अफ्रीका से आए थे। तो दुनिया का कोई भी ऐसा महादेश छूटा नहीं है जहाँ के लोग हमसे ट्रीटमेंट लिए ना हो। तो ये है हमारे काम का एक संक्षिप्त परिचय। और ज़्यादा बेहतर में समझना चाहते हैं तो यू कैन एक्सप्लोर आवर यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट। तो इस लाइव में हम अब पेशेंट की वॉइस को सुनाना चाहेंगे जो विभिन्न जगहों से आए हैं। एक एक करके मैं बुलाना चाहूँगा। मैं एक बार फिर से उनकी तरफ एक बार कैमरा टर्न कर दे रहा हूँ। ये हैं सारे पेशेंट्स। और आई थिंक थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया है, ओह सॉरी, थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया है, थोड़ा कम करता हूँ। तो ये सारे पेशेंट्स हैं, विभिन्न जगहों से आए हैं, विभिन्न वॉइस और स्पीच की समस्या को ले करके। और पोस्ट ट्रीटमेंट लाइव हम करेंगे 8 दिन के बाद, आप लोग ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा सुजीत को। सुजीत आ जाइए। चूँकि आज समय का थोड़ा सा अभाव है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ टॉपिक पे चर्चा नहीं कर पाऊँगा। तो हमारे जो प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट दूसरे लाइव होते हैं तो उसको आप लोग देखिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सुजीत से बात करते हैं। सुजीत कहाँ से आए हैं और क्या समस्या से जूझ रहे हैं? और आज हम लोग लाइव हैं ट्रीटमेंट से पहले। सर हम पलामू झारखंड से आए हैं। मेरी आवाज़ अच्छा एक मिनट ये तो मैं माइक लगाना भूल गया और आप मांगना भी भूल गए। हाँ बताइए क्या समस्या से जूझ रहे हैं? सर हम पलामू झारखंड से आए हैं। मेरी आवाज़ पतली सी है और दबी हुई जैसे, मैंने लाउडली हम बोल नहीं पाते हैं और ज़्यादा साउंड होता है वहाँ अगर हम बोलते हैं तो मेरा आवाज़ दब जाता है। ठीक है, थैंक यू। हम लोग आपकी प्रॉब्लम की समस्या को ज़रूर सही करेंगे। और 8 दिन के बाद हम ट्रीटमेंट के बाद लाइव होंगे तो लोग जो देख रहे हैं आप लोग ज़रूर देखिएगा क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, ठीक है आप बैठ जाइए।
नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा मैं शुभम को। शुभम आ जाइए। क्या समस्या है और कहाँ से आए हैं? आज हम लोग ट्रीटमेंट से पहले लाइव हैं यूट्यूब चैनल पर। हाँ, महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे हाई वॉइस थेरेपी की प्रॉब्लम है, मतलब मेरी आवाज़ पतली आती है और मतलब कॉल पर बात करने पर मैम जैसे मैम आगे से मैम बोलते हैं। महाराष्ट्र से। आपकी मदर टंग क्या है? मतलब मराठी। मराठी में भी बता दीजिए फिर क्या समस्या है? माझी आवाज़ म्हणजे पतली येते आणि पुढचं म्हणजे मॅडम म्हणून बोलतं मला। ओके, विल डू द नीडफुल। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा योगेश को। योगेश, आप बताइए कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और आज हम लोग ट्रीटमेंट से पहले लाइव हैं। सर मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। मेरा आवाज़ बहुत पतला है, तो क्या होता है जब बात करते हैं? बात करता हूँ तो बहुत पतला हो जाता है आवाज़, और फ़ोन पे बढ़ता हूँ तो मैम मैम करके बुलाते हैं। आप भी महाराष्ट्र से हैं ना? मैं महाराष्ट्र के अमरावती में। थोड़ा सा मराठी में भी बता दीजिए। मराठी नहीं, सिंधी। अच्छा, सिंधी में भी बता दीजिए। मां अमरावती महाराष्ट्र में आयो आहियां। मुंहिंजी आवाज़ ॾाढी पतली आहे। मां सर जो ट्रीटमेंट वठणो आहे SLP संजय कुमार। ओके, ठीक है। तो आपका नाम है शुभम ना? योगेश मंगरानी। योगेश, तो शुभम को मैंने बुला लिया है ना? हाँ, शुभम का हो गया तो ठीक है। योगेश का हो गया। अब धनेश, ठीक है, आप बैठ जाइए। धनेश को बुला रहा हूँ। थैंक यू। तो हम लोग लाइव हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या समस्या से जूझ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? सर मेरा नाम धनेश है। मैं बेंगलोर से हूँ। मुझे हाई पिच वॉइस की प्रॉब्लम है और कभी फ़ोन पे बात करता हूँ तो लड़की की आवाज़ है, कोई लड़की बात कर रहा है। ठीक है, आप हम पे भरोसा किए हैं और 8 दिन के बाद हम लोग पोस्ट ट्रीटमेंट लाइव होंगे। तो जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं ज़रूर देखिएगा पोस्ट ट्रीटमेंट 8 दिन में इनकी वॉइस क्या चेंज लाती है, और लाइव ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट धनेश हो गया ना? नेक्स्ट है सौंदर्य राजन। ठीक है, तो Sundar Rajan, what problem you are facing? Why you came to our center? Hello, I'm Sundar Rajan. Post lung surgery, I'm facing this vocal cord paralysis issue. So I came to Mr. SLP Sanjay Kumar sir for treatment. Okay, we'll do the needful. And today we are before treatment live, and in fact in the future we'll be doing post treatment live also. So next I'll be calling Ravi Shankar. Yeah, just 1 minute. Yeah, Ravi Shankar ji, we are live before treatment. So what challenges you are facing? Why you came here? I am a singer. While singing, I have to give a lot of pressure, and my voice is horsey, always horsey, and breathy. I can't sing easily. Okay, we'll do the needful. Thank you so much. And after Ravi Shankar is Samshad Ali. And Shamsad Ali is having phonatory gap as well. Oh, yeah, Shamsad Ali. We are live at our YouTube channel. Why you came to our center? Hello, my name is Shamsad Ali. Yeah, I have a high pitch problem and also phonatory gap issue, and that's why I came here, and I'm going under treatment with SLP Sanjay sir. Okay, thank you. And we'll do the needful. And 1 minute. And next is Mubarak Hussain. So Mubarak Hussain, please come. So Mubarak, what problem you are facing and what is the ENT finding? सर मेरा वोकल कॉर्ड में गैप है, फोनेटरी गैप है, तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो फोनेटरी गैप तो मान लीजिए वो वोकल कॉर्ड की समस्या होगी। वॉइस में क्या समस्या होती है? वॉइस में सर ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाता, और कोई दूर में रहे तो बुलाने में भी प्रॉब्लम होता है। फ़ोन पे बात करते हैं तो क्या होता है? कभी कभी वो पहचान लेता है कि मेल बचा, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है मेल या फीमेल, तो फिर कभी कभी मैडम। कहाँ से आए हैं? सर कोलकाता से आया हूँ। आपकी मदर टंग क्या है? বেঙ্গলি। বেঙ্গলি, तो थोड़ा बेंगाली में बता दीजिए। আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আমার ভয়েস কোড ভোকাল কোডে হচ্ছে ফেনাটোরি গ্যাপ রয়েছে, যার কারণে আমি ট্রিটমেন্টের জন্য এখানে এসেছি। ओके, थैंक यू। और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा लक्षित ना। आपका मुबारक है नाम ना? जी। तो लक्षित आ जाइए।
Yeah, Lakshit, what challenges you are facing? What is the problem? Why you are at our center? Just come this side. Myself Lakshit Sai, came from Bangalore. I have some voice problem regarding I feel some tiredness sometimes. Sometimes my voice will be breathy. Sometimes I'll feel voice is stuck when I'm talking. Okay, thank you. We'll do the needful. And the next is Saif Khan. Just 1 minute. Yeah, Saif, what is the problem? What is your profession? Why you came here? I'm Saif. My name is Saif. I'm come from UP and I'm PhD research scholar. I'm facing this voice disorder problem from my childhood, and I came here to treatment of my voice. So, how this is going to affect your career? This problem. I have to become an assistant professor. If my voice is not, if my voice is not going normal, so I don't think so I could become an assistant professor. And another problem is when I speak to somebody, they take me as alcohol. Okay, they think you have done the drinking and then you are talking. Something like that. Yeah, it's something related to the neurological problem also. So it's very challenging, but we'll try our best to help you. Thank you so much. Okay. And so I was just showing the patients, those who have come from different places. I'll be just turning camera once more. These are the patients whose voice you have heard. Actual number of patients are many more, but few are not comfortable with the video. So our clinic protocol is that those who will allow the video or they are comfortable with the live, we show them. तो इस लाइव में और भी हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे. The people have come with a pitch problem. So the why the high pitch voice happen, or one patient is the vocal cord paralysis. We'll be talking why the vocal cord paralysis happen and what we do in the voice therapy, and in the pitch problem also why it happens and what we do. So before that understanding of those things, let's understand the normal speech production mechanism. Once we understand the normal speech production mechanism, it will be easier for us to understand the abnormal. For normal speech production, first thing is the thoughts that comes in the brain. Then we take air, that air goes to the lungs. When we breathe out, we put air pressure below the vocal cords. So once you put air pressure below the vocal cords start moving like a string of a violin and guitar, and sounds generate. Then we modify that sound into different sound with the help of our articulators like lips, tongue, jaw, teeth, palate. These are known as articulators. So once you say a one sentence, so many things happen at a time. Thoughts come, we take breath, we put air pressure below the vocal cord moves, sound generate, we modify that sound into different sound. In one sentence, there are so many words, each word has so many sound, each sound has own place, own manner of articulation. So it's quite complex process. In this process, there are hundreds of our body muscles works in a very, very coordinated way. If coordination among those muscles will be affected due to any reason, fluency of speech will be getting affected. That can be seen in case of stammering. So few stammering patients are there, but they are not comfortable with the video, they are outside. And when the place of articulation is wrong, manner of articulation is wrong, there will be pronunciation problem. For example, for th production, tongue should come between the teeth, like th. But when you are putting your tongue somewhere else, the pronunciation of the th will be not be as it should be. So, for example, for p production, both the lips should come closer together, and we call it a bilabial sound. And the tongue should come between the teeth. For th production, that is a dental sound. For k production, back of the tongue should elevate and touch the soft palate. So it's called velar sound. So I want to say that each and every sound has own place of manner, its own place and manner of articulation. If place or manner will be wrong, there will be pronunciation problem. And if the coordination among the speech production muscles will not be there, there will be fluency problem. So let's talk about the pitch problem first. So why the high pitch voice happens? So like as I told here, we have larynx. Inside the larynx, we have two string-like structures known as vocal cords. So once you put air pressure below the vocal cords, the vocal cords start moving like a string of a violin and guitar, and sounds generate. So during puberty, the vocal cord mass length increases in case of boys due to a hormone called testosterone. If vocal cord mass will increase, length will increase, pitch reduces. For example, before puberty, the vocal cords will be a thin string of a guitar-like structure. But during puberty or after puberty, due to the testosterone hormone, it will become
thick string of a guitar-like structure. When the guitar string will be thin, pitch will be higher. When the guitar string will be thick, pitch will be lower. So ideally, those guys who are more than pubertal age, like those who have crossed the class 9, 10th, in a very simple way I'm telling. So their pitch should be lower. It should be the masculine. But many of the patient who is more than 14, 15 years and still in this group are facing the high pitch voice. Why? During puberty, for example, I'm taking the first patient, like Sujit. Sujit, what is your age? 19. The Sujit is a patient who is 19 years age. So during puberty, Sujit's vocal cord mass length got increased due to the hormone testosterone. So ideally, he was able to speak in a low pitch voice. But the Sujit has spoken the high pitch voice from childhood to puberty. So many years habit. And during puberty, vocal cord mass length got changed and it is ready to produce the low pitch voice. So because of the so many years habit, he will find slightly difficulty to switch on to the new voice. The reason we can say slightly psychological, because he has used so many years the high pitch voice, so he will try to maintain the high pitch voice. To maintain the high pitch voice, what he will start doing, if this is the vocal cord, so instead of whole mass and the whole length of the vocal cord to vibrate, he will start vibrating thin edges of the vocal cord to maintain the childish voice. Because when whole mass and the whole length of the vocal cord is using, it's like normal vocal cord, then it's thick now, so the pitch will be lower. But he has to produce the high pitch voice, childish voice, because of the so many years habit. To do that, what he will start doing, like he'll start vibrating thin edges. And now the vocal cord is actually a thick string of a guitar-like structure, but behaving like a thin string of a guitar-like structure. And when the guitar string will be thin, the pitch will be higher. So that's why here Sujit's voice is high pitch voice. So what I'm going to do in the voice therapy for him, if I will stimulate whole mass and the whole length of the vocal cord, means at present this part is just vibrating, and if whole part will start vibrating, the vocal cord which is behaving like a thin string of a guitar-like structure will start behaving like a thick string of a guitar-like structure. When the guitar string will thick, pitch will be lower. So this is the basic biophilics of the case I'm talking about, the Sujit. I did acoustic analysis and some other evaluations, so I found the vocal cords were perfectly fine. And but sometime what happened, if the condition which is started in the puberty and it has not been treated on the right times, it may develop the other problem. Because if my voice is low pitch voice and I'm continuously talking like, my name is Sanjay Kumar, something like that. So those having the puberphonia, from puberty onward, they are talking like this. And from so many years, so they are doing a kind of vocal abuse, and vocal abuse may result into the vocal nodule, phonatory gaps, sulcus vocalis, so many muscle tension dysphonia. So sometime puberphonia may result into the vocal nodule also, muscle tension dysphonia also, phonatory gap also, sulcus vocalis also, because of the long history of vocal abuse. So my here suggestion is, if anyone, your loved one, studying in the class 9, 10th, 11 maximum, if you know that and they are facing such challenges, they should be treated immediately. Because if they are coming to earlier age, we can treat very easily. But after long years, just delaying and not knowing this can be treated. So if it is developing into the phonatory gap or sulcus vocalis, the treatment becomes more challenging. Sometimes in such cases, I may help the patient, sometimes I was not able to help. So this is the truth. So you may share this to create awareness also, those who are watching this. And so I was talking about the high pitch voice, and even like I have read in my textbook, but I have not met any patient in the last 15 years of my clinical practice in this place. In rare cases, testosterone hormone issue also can result into the high pitch voice. But I have read in the textbook, personally I have not met any of the patient. When the patients are coming at the pubertal age, treatment is very, very easy, like a magical. And if I have treated at the age of 55 years also patients, and he was treated very easily. There was an 18 years guy and 55 years. 55 years still improved faster than the 18 years. So health science is a science of exception. But if that puberphonia may result into some other problem, like a sulcus vocalis, phonatory gap, or muscle tension dysphonia, then there is a problem. But if it is not developing in those abnormalities, then there is at any age we can treat very easily. Then the reason why we should treat earlier, sometime it is developing into the muscle tension dysphonia and phonatory gap, but sometime it is not developing.
very simple way to understand, like those who are smoking, sometime due to the smoking they will develop the cancer and they will die in the 40 years age also. And sometime I have seen some patient who are at the age of 90 years and they are smoking, they are still alive. So it doesn't mean that you should start smoking something like that, but if you are smoking, the chances of developing cancer is more. The same way, if a boy who is having the puberphonia, he is studying in the class 9, 10th, 11th and he is having such kind of voice problem, it has not get treated, maybe he can come at 55 years age also, people like me, and we can help. But sometime once it convert into the other voice disorder like associated issue, muscle tension dysphonia or phonatory gap or sulcus vocalis, then people like me will not be able to help much. So this is the message to create awareness. So what we do in the voice therapy, we just stimulate the whole mass and the whole length of the vocal cord, those are having the pitch problem, and then it will be a kind of magic. Many of my patients consider me like, okay sir, you are not a voice therapist, you are a magician, because the biophysics of the problem is so simple in treating the high pitch voice, unless it is not spoiled in the form of phonatory gap or sulcus vocalis. And let's talk about the vocal cord paralysis and dysphonia, because one patient is here, I think Mr. Sundarajan. So as I told, here we have larynx, and the larynx we have vocal cord, and vocal cord is a kind of muscle like a structure, and the vocal cord will be supplied by recurrent laryngeal nerve, and that is a branch of vagus nerve, 10th cranial nerve. So during some surgery, especially the cardiac surgery or some lung surgery or sometime the thyroidectomy, sometime trauma, sometime viral infection, sometime bacterial infection, sometime idiopathy, we don't know the exact reason, it may get damaged, the nerve impulses will not be supplied and it will not reach to the brain, the movement of the vocal cord will be get restricted or absent, so the condition is called vocal cord paralysis. So in voice therapy, what we do, we try to stimulate the paralyzed vocal cord so that it start vibrating. Sometimes it may happen also, and sometimes we are not able to do. Then what we do when we are not able to just stimulate the paralyzed vocal cord, suppose the left vocal cord is paralyzed, so what we'll do, we'll try to bring the right vocal cord more towards the left. So the gap between the vocal cord will reduce, the phonatory gap will reduce, the air wastage will reduce, and the voice quality will improve. Because when we speak, the vocal cord vibrate like this and they will come closer together. So when you are having the vocal cord paralysis, so when we are bringing the vocal cord, I'm saying so it will be, there will be gap between the vocal cord and the huge air will skip between these two vocal cord. So the loudness, the reason of the loudness is the amplitude of vibration of the vocal cord, and once the air is escaping, the amplitude of vibration of the vocal cord will be less, and then the loudness will be less. So in the voice therapy, we having two targets. First target is any of the thing is working, it's fine. Paralyzed vocal cord will start moving, or bring the normal vocal cord more towards the paralyzed one to reduce the phonatory gap, so the voice quality will improve. Air wastage will reduce, so amplitude of vibration of the vocal cord will improve, and the voice quality and the loudness will improve. So this is the thing I wanted to share about the vocal cord paralysis, and few patients outside are having the stammering. So as I told in the beginning, like there are hundreds of our body muscles works in a coordinated way when we speak. Those muscles are like breathing muscles, we call diaphragm, intercostal muscles, laryngeal muscles, articulatory muscles. So if coordination among these muscles will not be there, fluency will be getting affected. So in the speech therapy of stammering, what we do, we try to coordinate all these muscles. So first we'll work on the breathing muscles, then we'll come to the laryngeal muscles, then we'll come to the articulatory muscle, then we'll ask the patient to say some words, then phrases, then sentences, then reading, then conversation, then public speaking. This is the outline of the treatment for the stammering. And for stammering, we don't have 100% cure. Then maybe thinking why the people come here at our center. They come here to improve, not for 100% cure. Till now, I have not treated a single patient like 100% cure kind of thing. And treatment efficacy for, I'm talking just about the stammering, 80% our center. If 100 people are coming at our center for stammering problem, we have seen like 80% people found some significant change, and 20% people thought it was a wastage of time and energy. So those who are planning to come here, you can be any of the category, either 80% category or 20%, but 80 is more than 20, so hope is more. And as I told, something lagging the coordination among the speech production muscles with the brain. Basic in one sentence, if I'm defining the stammering, why it happens. But if we go little depth, it's very interesting examples are there. I have seen one stammering patient who came to my clinic. When I was taking the history, he was telling his father was having stammering, and they were twins. The twins' brother were having the stammering, father was having the stammering, grandfather was
having the stammering, then what does it mean? That there is certain gene passing from one generation to the another generation, so it can be genetic in origin. I have seen one patient who was telling he was absolutely normal and his neighbor child was having stammering and he was teaching to him and he developed the stammering. So normal child developed the stammering. कहने का मतलब कि एक नॉर्मल बच्चा था, पड़ोस के बच्चे को स्टैमरिंग थी, वो पड़ोस के बच्चे को चिढ़ाता था और चिढ़ाने के बाद नॉर्मल बच्चे को स्टैमरिंग होने लगी. इसका मतलब क्या हुआ? स्टैमरिंग कैन बी ए लर्न बिहेवियर. मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि एक बच्चा था जो कि अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच था. दादी की डेथ हो गई एंड देन द नॉर्मल चाइल्ड स्टार्टेड डेवलपिंग स्टैमरिंग. तो इट कैन बी, व्हाट डज इट मीन? दैट इट कैन बी साइकोजेनिक इन origin. Even I have seen the patient who was normal and after head injury he developed the stammering. So what does it mean? That it means it can be neurogenic in origin. Even I have seen that those kids who's like for all the kids 2 to 5 years age, during that speech language development will be very very fast, and they want to say so many things and they will be having limited vocabulary during the speech language developmental phase. So what will happen? They will stuck at certain point of time and the parents will think he is not talking properly and they will start giving negative. ऐसे क्यों बोलते हो? ठीक से बोलो. ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो if the parents negative comments also sometime may develop into the stammering. So if you are seeing this, the cause of stammering, neurogenic, psychogenic, learned behavior, genetic, parents comments. So many things are connected with us. But one thing is common. And that common thing is something lagging the coordination among the speech production muscles with the brain, and in the therapy we take this information and we design our therapy based on that. So this is the related to the stammering information, and yeah. And those who are new at our YouTube channel, and if you want to contact us, refer the description of this live stream and you will find our contact details. And if you want to know that if you are having any communication problem, what will be the cost and duration and outcome, so please call us. We'll do the perceptual evaluation and accordingly we'll guide you. So this is the information I wanted to share, and today we are slightly running late, and I think yeah, if any important information which I have missed I want to tell. And yeah, and we don't have any branch of our center. Our center is still now only one, that is located in Bangalore, and I'll check if any questions are coming from the live stream. I'll try to give the answer. Okay. If you have any question, you can ask, and I'll be. And I have just finished this live little faster. I have not spoken much, so we do frequently live streams. So please refer our other live stream, pre and post. We'll get so many information. I think this is fake. How is it possible to change your voice within 8 days? I don't know what to answer. Okay, I think yeah. So that's why we do the live. So I don't think these faces are live, fake. I'll just turn this, and you can watch post treatment live also. You'll find this kind of faces. थोड़ा हाथ भी हिला दीजिए ताकि लगे कि कोई AI जनरेटेड नहीं है. हाथ हिला दीजिए. इतना ज़्यादा AI एडवांस नहीं हुआ कि मैं बोलूँगा हाथ हिला दीजिए तो लोग हाथ हिला देंगे. ठीक है ना? फिर से एक बार हिला दीजिए जो इधर सब लोग. ठीक है ना? ये AI नहीं है, ये लाइव स्ट्रीम है यूट्यूब पे. ठीक है ना? तो क्यों होता है ये? अब ये साइंस है और आर्ट्स है. ठीक है. और शायद आपको वो कोई लिखे जीवन. आई थिंक दिस इज़ अ फेक. हाउ इट इज़ पॉसिबल टू चेंज वॉइस विद इन 8 days? सो इट कैन बी चेंज बाय द वॉइस थेरेपी, एंड आई एम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट. आई हैव स्टडी फ्रॉम AIIMS न्यू दिल्ली. यू कैन फाइंड AIIMS न्यू दिल्ली इज़ नॉट फेक. माई डिग्रीज आर नॉट फेक. आई विल जस्ट शो द डिग्री ऑल्सो, एंड थोड़ा सा लोगों का दूर कर देते हैं. अगर ये देख रहे होंगे ना ध्यान से, सो यू कैन रीड दिस इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, एंड द डाउन यू विल फाइंड द all the people like AIIMS president will be the health minister of India. The extreme right side is the Ambuni Ramadas. He was the health minister during my time. So extreme right, you can say that. Okay, and the director was the P. Venugopal, one of the most famous cardiac surgeon. You can find his name in the P. Venugopal in the Google. You will find it. Who was he? And this is my master degree, Master of Science in Speech Language Pathology. तो ये हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे कोर्सेस, हमारी ट्रेनिंग का नतीजा है. दुनिया कहाँ से पहुँच गई है आप अभी AI तक ही सोच पा रहे हैं. ये फैक्ट्स. तो ये 8 दिन में ट्रीटमेंट होता है, और हमारे होम पेज पे जाएंगे तो अमेरिका से और रसिया से भी लोग ट्रीटमेंट लिए हैं. तो पता कीजिए थोड़ा डिटेल में. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पे मैं जाना चाहूँगा. उत्कर्ष तिवारी लिखते हैं, सॉरी सर, मैं बैच में
आ नहीं पाया तो उत्कर्ष तिवारी प्लीज़ कॉल अस फर्स्ट, विल डू द परसेप्चुअल इवोल्यूशन, देन वी कैन सजेस्ट you can be a right candidate for voice therapy at our center or not. And thank you. Next is Tiwari ji is asking about my talk at Amity University. I don't know, I have recorded or I have not recorded, so that it was just normal talk with the faculty and students to that university. And Rakesh is saying hello sir, सर मेरा वॉइस चेंज कर दो सर। तो राकेश मुझे पता नहीं है आपकी समस्या क्या है, तो आप हमें कॉल कीजिए, आपकी आवाज़ को सुनेंगे, समझेंगे, फिर हम गाइड कर पाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वाचिंग अस। और आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कई बार पेशेंट पूछते हैं सर खर्चा कितना आएगा, टाइम कितना लगेगा, तो उसके बारे में तभी बताते हैं जब पेशेंट का इनिशियल परसेप्चुअल एवोल्यूशन हम करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली टाइम, ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में हम बता पाते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा जो कॉल सेंटर का नंबर है इस लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वाचिंग अस, एंड आवर नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वॉइस थेरेपी विल बी स्टार्टिंग, नेक्स्ट बैच ऑफ ग्रुप थेरेपी विल बी स्टार्टिंग ऑन 17 जून 2025। तो अगला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 17 जून 2025 को स्टार्ट हो रहा है। और एक क्वेश्चन और आ रहा है, अननोन लिखते हैं, a lot of people claim to switch voice with overcoming puberphonia because actor, do you permanently change the voice? So in the puberphonia, once we treat the patient and if the body responds to what we have changed, it was stable. And to answer that, I get lot of questions, सर रिलैप्स तो नहीं हो जाएगा यहाँ से जाने के बाद? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बोलूँगा रिलैप्स नहीं होगा तो पेशेंट के मन का डर क्यों ख़त्म होगा। शायद मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पेशेंट को उम्मीद देने के लिए बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, जिनका ट्रीटमेंट 5 to 7 years बैक हमने ट्रीटमेंट किया था उनके साथ हमने लाइव किया, जो हमारे वैसे पेशेंट थे जिनका 5 years 7 years बैक ट्रीटमेंट किया था कोविड पैंडेमिक के सेकेंड वेव के टाइम में। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखते रहता हूँ वॉच दिस 35 minutes वीडियो, 35 minutes वीडियो, एक बहुत होगा, बहुत सारे कमेंट्स में लगभग रहता है। तो उस 35 minutes वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सारे जो लिंक मिल जाएंगे उस सारे लाइव के। तो मतलब कि हमारे पुराने पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट का समय 5 साल 7 साल बीत चुका है उनके साथ हमने लाइव किया और वो बता रहे हैं कि उनकी वॉइस स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, और इनफैक्ट लास्ट बैच में हमारे पुराने पेशेंट ने कुछ पेशेंट को रेफ़र किए थे तो वो यहाँ पे आए थे। इसका मतलब जब पुराने पेशेंट ठीक हो गए हैं और ठीक होने के बाद उनकी वॉइस स्टेबल है तभी तो दूसरे को भेज रहे हैं। और जो दूसरा आया था वो भी यही बता रहा था कि उसकी वॉइस स्टेबल थी। महाराष्ट्र कहीं था शायद वो लास्ट ग्रुप में, मैंने उससे बात की थी लाइव स्ट्रीम, फिर वॉच विल फाइंड इट ऑल्सो। तो मेरा ये कहना है, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जैसे कि स्पास्मोडिक डिस्फोनिया और स्टैमरिंग, इसमें ट्रीटमेंट के बाद भी कभी कभी रिलैप्स हमने देखा है। लेकिन अगर हमने पिच की प्रॉब्लम है, हाई पिच वॉइस का अगर ट्रीटमेंट किया है, पुबरफोनिया का ट्रीटमेंट किया है, तो एक बार ट्रीटमेंट कर दिया है तो अब तक का मेरा यही एक्सपीरियंस है कि दैट वॉइस वॉज स्टेबल। तो अगेन आई विल बी एडिंग वन लाइन, हेल्थ साइंस इज़ नॉट मैथमेटिक्स, 2 + 2 = नॉट ऑलवेज 4, बट अभी तक का मेरा रिलैप्स का केस नहीं देखा है। फ्यूचर में क्या होगा वो वक्त बताएगा। ठीक है, और भी लोग चीज़ एक पूछते हैं, एक क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा कि हाँ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो होता है कि हाँ, कि पेशेंट को फिजिकली क्यों आना पड़ता है। आजकल बहुत कॉल आते हैं कि सर ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट कर दीजिए, समय का अभाव है या कुछ भी है। तो कुछ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर पाते हैं, कुछ में नहीं कर पाते हैं। कारण ये है कि अगर जैसे कि आपको सर्जरी करानी है तो सर्जरी ऑनलाइन नहीं हो सकता है ना, डॉक्टर को और पेशेंट को प्रेजेंट रहना ज़रूरी है क्योंकि फिजिकल टच की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह से वॉइस डिसऑर्डर के मैनेजमेंट में भी क्लिनिशियन जैसे हमारे वॉइस थेरेपिस्ट को और पेशेंट को रहना ज़रूरी है क्योंकि फिजिकल टच की ज़रूरत होती है लैंग्वेज मैनिपुलेशन के दौरान। तो वैसे केसेस में हम फिर ऑनलाइन वॉइस थेरेपी रिकमेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर वैसा कंडीशन आ जाता है तो हम हाइब्रिड मोड का सहारा लेते हैं। कुछ अगर पेशेंट के पास समय की बहुत कमी है तो कुछ सेशन हम क्लिनिक में देते हैं, कुछ घर पे देते हैं। तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब एक बार देख लेते हैं कि और भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वाचिंग अस, थैंक यू सो मच। और एक बार मैं उन सारे पेशेंट की तरफ
अच्छा हाँ, और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी आप वॉइस थेरेपी, स्पीच थेरेपी लीजिए तो आपके जो थेरेपिस्ट हैं उनके क्रेडेंशियल की जांच पड़ताल ज़रूर कीजिए, ताकि ये अगर हमारे पोस्ट पेज में जाएंगे यूट्यूब के तो हमने स्टेप्स बताए हैं कैसे आप पता करेंगे कि वो असली है या नकली, तो ये ज़रूर पता कीजिए, स्टेप्स मैंने बताए हैं। तो एक बार मैं कैमरा टर्न कर रहा हूँ उन सारे पेशेंट की तरफ और इस लाइव को हम लोग स्टॉप करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, बात दूर तक पहुँचाइए, क्या पता किसी के काम आ जाए। और पोस्ट ट्रीटमेंट लाइव हम 8 दिन के बाद करेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। एक्चुअल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कहीं ज़्यादा है, सारे लोग वीडियो के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो हमारी क्लिनिक की पॉलिसी यही होती है कि जो लोग वीडियो के लिए कंफर्टेबल होते हैं उन्हीं को हम लाइव में दिखाते हैं या उनका वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग अस। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। अब हम इस लाइव को स्टॉप करेंगे। जिनका भी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा। थैंक यू सो मच, और कुछ सजेशन है तो हमें ज़रूर दीजिएगा।